तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लिखने वाला हूँ 100 WPM की डिक्टेशन। और मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि मैं कैसे लिखने वाला हूँ। स्टार्टिंग करने से लेके पेज टर्न करने तक सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और लास्ट में कैसा डिक्टेशन था इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ में डिक्टेशन लिख सकते हैं। तो जो डिक्टेशन मैं लिखने जा रहा हूँ उसका टाइटल है इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 391 @ 100 WPM। और यूट्यूब चैनल का नाम है PR इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस। तो आप चाहें तो इस वीडियो को निकाल भी सकते हैं बाद में, या फिर चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। You are watching PR English Shorthand Dictation's YouTube channel. This is English Shorthand Dictation number 391 and the dictation speed is 100 words per minute. Ready? Start. The learned counsel appearing for the appellant has taken us through the notes of evidence of material prosecution, witnesses and other documents on record of the trial court. His submission is that last seen together is a very weak circumstance, as there is evidence on record to show that the appellant and the deceased were related. Very often they used to consume liquor together. He submitted that the recovery of the knife at the appellant's instance had not been proved. He submitted that even the existence of motive has not been pleaded and proved by the prosecution. He also submitted that if the oral evidence of PW7 and PW15 is considered together, the theory that the death occurred due to an accident of motorcycle cannot be ruled out. Therefore, the benefit of the doubt must be extended to the appellant. He submitted that every circumstance constituting a chain of circumstances has not been established. The learned counsel appearing for the state supported the impugned judgment. She submitted that the dead body of the deceased was found within a few hours from the time at which the appellant and the deceased were last seen together. She submitted that recovery of the weapon used by the appellant to attack the deceased had been duly proved, and all circumstances forming part of the chain of circumstances have been established. We have carefully perused the evidence of PW2, who deposed that on 29th September 1993 till 9 p.m. the appellant and the deceased consumed liquor in his house. He deposed that the appellant and deceased left his house after consuming liquor. He stated that the appellant and the deceased had gone towards Mango Orchard. The body of the deceased was recovered on the next day. In the cross-examination, the PW2 stated that 2 to 4 times the appellant and the deceased had come to his place to drink liquor. He stated that the deceased used to consume a lot of liquor. PW6 Srimati Anjana Devi is the wife of the deceased, who deposed that the appellant came to her house and gave a currency note of ₹50 to the deceased and forcibly took him for drinking. After that, the deceased did not come back. She stated that she deputed her elder son to the appellant's house, where the sister-in-law of the appellant informed the elder son of the deceased that the appellant was sleeping in the house. Thereafter, the appellant himself visited the house
of PW6 and inquired whether his brother-in-law had come back. She deposed that at 12:30 p.m., one Raju informed her that the dead body of her husband had been found. She admitted that her husband used to drink alcohol occasionally. Sometimes he used to get drunk and people used to bring him back home. She stated that when her husband went with the appellant, she knew that they were going to drink liquor. PW7 stated that the deceased was his nephew. In the cross examination, he accepted that the deceased and appellant always used to be together. Thus, this was not the first occasion when the deceased and the appellant went together to consume liquor. Apart from being closely related, they had a close contact and they used to be together for drinking. The prosecution has not come out with a case that there was some motive on the part of the appellant for killing the deceased. Neither PW2 nor PW6 stated that on 29th September 1993 there was any dispute or altercation between the appellant and the deceased. Thus, the deceased being in company of the appellant on 29th September 1993 was not an unusual circumstance. This makes the case based on the theory of last seen together very weak in absence of motive. Now we come to the evidence of recovery of the weapon of offense at the instance of the appellant. The first witness to the recovery memorandum under section 27 of the Indian Evidence Act 1872 is PW2. In the examination in chief, he said that he was not aware who told the police that the knife was lying in a particular place. He stated that the police had said they were trying to find out the place the accused was telling. He stated that soil and knife were recovered from different locations. He stated that he signed on papers on which something was written, which was not read over to him. He further stated that he was illiterate. PW4 Arjun stated that the police personnel had taken them to the place where the knife was found. The witness said that he saw the knife first and thereafter the police picked it up. He stated that he was not aware who had told police that the knife would be found at that place. On plain reading of the evidence of these two witnesses, it is apparent that the recovery of the knife at the instance of the appellant has not been duly proved. They have not stated that the discovery was made from a place disclosed by the appellant in their presence. Moreover, memorandum recording the statement of the appellant has not been duly proved. So, one part of the chain of circumstances has not been established. PW7 stated in the cross examination that he had gone to the place of incident. He stated that there were pieces of glass lying there. He stated that the pieces of glass may be of the light of a motorcycle. He stated
that he had informed the police that the deceased may have sustained injury due to an accident involving a motorcycle. PW-15 is the doctor who performed a postmortem of the body of the deceased. In the cross-examination, he admitted that if the glass pieces were small and sharp, the injury sustained by the deceased could have been caused by small pieces of glass. The reason behind the overthinking. तो दोस्तों ये पूरा का पूरा डिक्टेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब एक्चुअल डिक्टेशन आती है, चाहे आप नॉर्मल डिक्टेशन में कितना भी फास्ट लिखो, एक्चुअल डिक्टेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो ही जाती है, ये बात बिल्कुल ही सच है। लेकिन ये डिक्टेशन जो था लिखने के लिहाज से काफ़ी अच्छा गया है। और मेरे हिसाब से एक जगह 2 वर्ड मेरे छूट गए, 2 या 3 वर्ड, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा, वहाँ पे मैं रुक गया था। और सुनने के कारण फिर जब डिक्टेशन आगे बढ़ी तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं आया। लेकिन उसके अलावा मैंने एक एक वर्ड इसमें लिख दिया और काफ़ी बढ़िया से गया है। जैसे ये लास्ट वर्ड है तो ये एम जैसा लग रहा है, वैसे ये गिलास है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऊपर उठाया, ये जी से GLAS, ठीक है, ग्लास। तो ये भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये तो याद रहेगा। वहीं पे आप देख सकते हो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मैंने इस वर्ड का यूज़ किया है। क्रॉस यहाँ पे लगा देते हैं तो इससे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। और अगर वर्ड होता क्रॉस एग्जामिनिंग तो यहाँ पे एक डॉट लग जाता, तो क्रॉस एग्जामिनिंग बन जाता, ठीक है। उसके अलावा हम क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिन या क्रॉस एग्जामाइन, जैसे भी आप कहते हैं, उसे इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सर्कमस्टांसेस को हम ऐसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर SS, और सिर्फ सिंगल सर्कमस्टांस हो तो लाइन के ऊपर एक S लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईयर लिखते वक्त आप देख सकते हैं कि 93 लिख के नीचे जब आप लाइन खींच देते हैं तो इसका मतलब है पिछले 100 साल की बात हो रही है, तो 1993 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है being in company of the appellant on 29 September 1993 was not an unusual circumstance. 1993 was not an unusual circumstance, ठीक है। This makes the case based on the theory of last seen together very weak in absence of motive नाउ, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फुल स्टॉप यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोस्तों डिक्टेशन में भी फुल स्टॉप नहीं बोलते, और आप जब ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं तब आप फुल स्टॉप को वैसे भी पता लगा सकते हैं कि फुल स्टॉप था या नहीं था, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे ही लिखा है। वहीं पे PW के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लेटर्स का यूज़ किया है, P और U, ठीक है। आपको पता होगा कि ग्रेग शॉर्टहैंड में हम U के लिए कई बार W के लिए कई बार U का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये आप कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म बना लिया PU। PU से क्या होता है, PW होता है आपका, ठीक है, क्योंकि W के लिए हमारे पास स्पेशल लेटर कोई नहीं होता। वैसे PU से पुअर भी होता है, जो हमारा ग्रेग की एनिवर्सरी वर्जन का मतलब फॉर्म है, PU से पुअर भी होता है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे PW की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि डिक्टेशन में आता है इसलिए मैंने बना लिया था। वहीं पे एपेलेंट के लिए आप देख सकते हैं AP और NT स्ट्रोक, AP और NT को यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे कई जगह पे क्या हुआ है कि स्ट्रोक्स की कह सकते हो कि जो प्रोपोर्शन होना चाहिए था वो थोड़ी बहुत बिगड़ गई है। अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए तो उससे भी बचाया जा सकता है बिगड़ने से, खैर, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही बिगड़े तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप पता लगा ही लेंगे। जैसे कि अगर मैं पढ़ के दिखाऊं, द लर्नड काउंसिल अपियरिंग फॉर द एपेलेंट हैज़ टेकन अस थ्रू द नोट्स ऑफ एविडेंस ऑफ मटेरियल प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन ये तो आप ज़रूर देख सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के लिए जो कोड बनाया हुआ है वो है PRSH, ठीक है, लंबा लिखने से काफ़ी अच्छा ही है। और विटनेसेस के लिए हम UEN का यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे विटनेस लिखने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन UEN का यूज़ करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, जो कि विन का भी मतलब फॉर्म होता है, लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट से 100% क्लियर हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है विटनेसेस मटेरियल प्रोसिक्यूशन, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप आएगा जो कि हम समझ जाएंगे, विटनेसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ओके, जो ट्रायल कोर्ट था वो मेरे से 100% गलत हुआ है, ऐसे मैं लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन लिखा गया, और मुझे पता था कि मुझे ये याद रहेगा कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट है, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वैसे जो ट्रायल कोर्ट होता है उसको लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, ये हो गया ट्रायल और उसमें हमें के लगा देते हैं तो ट्रायल कोर्ट बन जाता है, और इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं ट्रायल कोर्ट ऐसे। तो मैं बेसिकली ये लिखना चाह रहा था लेकिन वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रायल कोर्ट को लिखने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि आप TR करके नीचे KT भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया ट्राई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट, ठीक है।
तो जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। तो अगली बार से मैं शायद इस फॉर्म का यूज़ करूँगा, इसमें मेरे को दिक्कत हुई है क्योंकि। तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे कभी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि कैसा गया आपका डिक्टेशन, अगर आपने साथ में लिखा था तो, और कोई दूसरा सजेशन हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।